So this is class 6 NCERT. Now this is not a chapter, basically this is an introduction where what we have to see is that why do we have to study social science? Why social science, right? Okay, so let's see. Now this is social science. In this we have various perspectives. We have theme A, we have theme B, theme C, theme D and theme E, right? Now theme A says India and the world, land and the people. Now this is basically your geography, right? Next we have theme B, that is tapestry of the past, that is basically your history. Next we have theme C, our cultural heritage and knowledge traditions, that is basically your art and culture, right? Next we have theme D, that is governance and polity, governance and democracy, that is basically your polity, or we can say political science. Now theme E says economic life around us, which means this is the economy, right, that we have to study. Okay, now let's dive deeper into theme A and let's see what all specific topics we have to cover. So first that we have is locating places on the earth. We should understand कि हम earth पे places को अलग अलग जगहों को कैसे locate कर सकते हैं, right? Next we'll study about oceans and the continents, and then we'll study the landforms and the life. In history, first we'll study the timeline and sources of history. Now sources of history is basically from whatever we know about our past, whatever we know about the history, वो चीज हमें कहाँ से पता चलती है, वेयर डू वी गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स अबाउट आवर पास्ट, दैट इज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टाइमलाइन की पास्ट में इस पीरियड से इस पीरियड, इस एरा में ये हुआ, इस एरा में ये हुआ, दैट इज योर टाइमलाइन. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इंडिया, दैट इज भारत, एंड देन वील स्टडी द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कि इंडिया में सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ. Then in theme C we have India's cultural roots and unity in diversity, or many in the one. In political science, in polity, first we'll study about family and the community, then we'll study about governance, then we'll see local government in rural areas, कि rural level पे rural areas में local government क्या होता है, क्या role होता है, क्या importance होता है, how they are appointed and everything. Local government in urban areas, local government in rural areas की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है पंचायत सिस्टम, पंचायती राज. ठीक है. And if we talk about local government in urban areas, then we have municipality, right? Now let's see economy में we have the value of work and the economic activities around us. ठीक है. Okay, now let's move on. See, observe the picture above. What do you notice? Is your picture given here? We have to certain questions are given and we have to answer them. Where does the water in the lake come from? Who made the road and why? What could be the activities of people living in the small house, and what could be their history and their future? Okay. Okay, next we have write down your answers and discuss them with your classmates. Okay, fine. देखो, ये जो पिक्चर जो हमारे पास गिवन है, इट सेज कि ये जो वाटर आ रहा है, ये जो रिवर है, ये जो लेक है, व्हाटसोएवर, इस पानी, इस वाटर का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस रिवर. ठीक है. देन द क्वेश्चन सेज हु मेड द रोड एंड व्हाई. ये जो रोड आपको दिख रहा है, दिस इज अ प्रॉपर मेटल रोड, मतलब कच्ची सड़क नहीं है, पक्की सड़क है. ठीक है. तो द क्वेश्चन अराइजेस कि पहली चीज तो किसने बनवाया, हु मेड इट, एंड व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड मेकिंग दिस रोड. कुछ तो मोटिव होगा कि ऐसा इलेक्शन आ रहा है, हमने रोड बनवा दिया, हमें वोट दे दो, समथिंग लाइक दैट, और मे बी सिंपली फॉर द डेवलपमेंट. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट कुड बी द एक्टिविटीज ऑफ पीपल लिविंग इन दी हट्स इन दी स्मॉल हाउस. इस हाउस में जो लोग रहते होंगे, इनका ऑक्यूपेशन क्या है, इनका प्रोफेशन क्या है, व्हाट डू दे डू टू अर्न देयर लिविंग, वो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं. ठीक है. ओके. How are your questions above relevant to social science? We live in the 21st century. ये जो time चल रहा है, if you do not know what this figure really means, you will soon learn about it. But ये जो अभी हम जिस basically जो 2025 जो चल रहा है, that is the 21st century. ठीक है. Everyone agrees that it is a particularly challenging time for humanity. On the one hand, there is rapid progress in technology, which is changing our lives in many ways. On the other hand, the world is witnessing multiple wars, armed conflicts, and rising social tensions, and our planet's natural environment is under great stress. We live in an age of great possibilities but also great challenges. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, बेसिकली जो हमारा अभी जो टाइम चल रहा है जो ह्यूमैनिटी का,
इसमें हम बहुत रैपिडली प्रोग्रेस भी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं दैट वी आर लर्निंग, बट एट द सेम टाइम वी आर विटनेसिंग मल्टीपल वॉर्स, बहुत सारे वॉर्स साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ठीक है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, सोशल टेंशंस बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं. सो इट इज़ बेसिकली ऑल दिस थिंग्स, स्पेशली द इन्वायरमेंट, वो बहुत ही ज़्यादा थ्रेट, इट इज थ्रेटेन, बहुत ज़्यादा थ्रेट है उसको, राइट. देन द क्वेश्चन, देन व्हाट इज रिटर्न इज, वी लिव इन एज ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज, मतलब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें करने की पॉसिबिलिटी है, बट एट द सेम टाइम हम बहुत सारे बड़े चैलेंजेस को फेस भी कर रहे हैं, राइट. द वर्ल्ड ओवर मोर एंड मोर पीपल वंडर how do we solve the problems facing humanity? How do we solve the problems facing humanity? How can our societies learn to live in peace and harmony? How can we protect this beautiful earth that we all share and protect it not only for ourselves but also for all the species that live on it? तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा अर्थ है बेसिकली, कि इतना सुंदर प्यारा अर्थ है, हाउ डू वी हैव टू प्रोटेक्ट, हम उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बाकी जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे अर्थ पे रहते हैं, ईच एंड एवरी स्पीशीज, हम उन लोगों के लिए भी अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन चीजों से, राइट. नाउ दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस आर सिंपल, जो क्वेश्चन पूछने के हम क्या करें अर्थ को बचाने के लिए, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करें, सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल, बट द आंसर्स आर नॉट, इसके जो आंसर्स होते हैं दैट इज नॉट सिंपल, दे कैन नॉट बी सिंपल इन फैक्ट, बिकॉज ह्यूमन सोसाइटीज आर वेरी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स. जो ह्यूमन सोसाइटी है हमारी, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, वी आर नॉट सिंपल ह्यूमन बींग्स, और कॉम्प्लेक्सिटी एट द सेम टाइम डाइवर्सिटी भी है. दैट इज वाई इंडिया इज अ ग्रेट ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे, बट स्टिल हम एक साथ वी आर लिविंग टुगेदर in harmony. Yes? Okay. If we wish to find answers to such questions and help build a better future, we first need to understand our world and human societies in particular. That is what social science is all about. Now, as I said कि हम एक साथ रह रहे हैं, हारमोनी में रह रहे हैं, that is one aspect. But if you flip the coin and see it on the other hand, or maybe, तो you will see कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हारमोनी में नहीं है, and that's absolutely fine, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो सबका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है. But what we should do is we should at least respect the other people opinion at least, और इतना जो challenges basically the wars and everything वो नहीं होना चाहिए, right. You may wonder whether this is a science like say physics or chemistry or maths. It is not. The discipline does not use scientific methods wherever possible. The discipline does uses scientific methods wherever possible. जो हमारा social science है, जहाँ पे इसको लगता है that we need certain methods or certain concepts or approaches of science, we do use it, ठीक है, वहाँ पे possible होता है, we do use it, but it's focused. Human societies again too diverse to follow or diverse to allow a kind of set procedures and fixed the results the science come up with. क्योंकि जो साइंस होती है उसमें हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन होता है दैट इज वेरी फिक्स्ड एंड यूनिवर्सल. बट इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन सोसाइटी, इफ यू टॉक अबाउट अ सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है वो इतनी डाइवर्स है कि इस पे एक जनरल लॉ ऑलमोस्ट, और वी कैन से मोस्ट ऑफ द टाइम फिट नहीं हो सकता. सोशल साइंस हैज मेनी सब डिसिप्लिन. सोशल साइंस से हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग सब पार्ट सब डिसिप्लिन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, political science, economics, sociology, anthropology, archaeology, psychology, and few more. You need not feel intimidated by all these terms while you will study some of these subdisciplines in the secondary stage. In the middle stage, we have avoided this classification. Instead, we have opted for 5 broad themes. Let us briefly look at them. So, first theme A is your history. Geography. India and the world, land and the people. This is your geography part, as I told you in the beginning, right? The first theme includes the basics of the geographical world around us, some of the main features of our planet, and the way to represent them on a map. कुछ कुछ बेसिक फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे वर्ल्ड के, हमारी दुनिया के मेन फीचर्स बेसिकली अपने प्लानट के, एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट देम. एक मैप है हमारे पास, उस मैप पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न. Now, why is this theme important when today we get excellent maps on a mobile phone? ये चीज़ important क्यों है? क्योंकि आज के हमारे पास गूगल मैप है हमारे पास,
तो हमें क्या ज़रूरत है? Because it deals with much more than maps. It also asks how geographical features such as oceans, mountains, rivers, plateaus, etc., have shaped entire civilization throughout their histories. ये जितने भी जोग्राफिकल फीचर्स हैं हमारे पास, बीट ओशंस, बीट माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेटूज, डेजर्ट्स, तो जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों की वजह से हमारा जो सिविलाइजेशन है वो काफ़ी हद तक मतलब उसे एक डायरेक्शन मिली है. दे हैव शेप्ड एंटायर civilization throughout its histories. It is also in India's case about how its natural setting has contributed to giving this ancient civilization a unique identity. Now in theme B over here, this is again history. We are coming on to history, to the tapestry of the past. A tapestry is a large piece of canvas like cloth. जो tapestry होता है वो क्या होता है कि ऐसा बड़ा सा cloth होता है. It is not basically a cloth, but एक canvas type होता है जिसपे you can paint, right? Okay. Usually kept as a wall hanging with pictures and designs on it. इसको आप wall पे hang कर सकते हो because on it you have pictures and various designs and beautiful paintings. Our tapestry is where we'll be painting scenes from the past. यहाँ पे हम past के बारे में पढ़ेंगे. Beginning with India's past, India के past से start करेंगे हम पढ़ना. But why should we be at all concerned with the past? हमें मतलब past पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? Because it is the key to understanding the present, and the chapters in this theme will often make this connection clear. The past is a major source for our identities. It helps us understanding who we are, where we come from. जो हमारे ancestors थे, हमें basically अपने ancestors के बारे में पता चलेगा. We'll get to know about the very first human beings की human beings कहाँ से start हुए, क्या हम directly हम ऐसे बिल्कुल ऐसे developed proper ऐसे इंसान थे जैसे अभी हम हैं. तो answer is no. ठीक है, because earlier we had Paleopithecus, then we have Australopithecus, then we have Homo habilis, then Homo erectus, then Homo sapiens, and then Homo sapiens sapiens. So Homo sapiens sapiens, we are Homo sapiens sapiens, right? We are the most developed man. But ठीक है, इस चीज को we'll study later. We are getting distracted from the topic, right? Okay. Now the past is still with us, in other words, and since history is unfortunately not all about happy developments, it is useful to understand where people, governments, or rulers went wrong and why. Because basically अगर हम देखें, if we study history, we get to learn a lot of things. हमें सीख मिलती है कि what we should do, ठीक है, और what we should not do. ठीक है, only then we can hope to avoid repeating those errors. क्योंकि जो गलती past में हमारे ancestors ने करी है, और maybe not necessarily our ancestors, but any king or ruler or any human being in the past that we are studying about, अगर वो गलती उन्होंने करी है, so if we read about it, we get to understand कि ठीक है वो कर दी, but why is it wrong and what are the consequences of that action. So could be a possibility कि अगर कुछ वैसा चांस हमें in present या maybe in future मिलता है, so we'll not repeat that. ठीक है, because we know कि ये चीज़ गलत हो सकती है. Now theme C are cultural heritage, knowledge and traditions. As I said, art and culture. It has often been said that India has a rich and ancient culture. True, but what are its main characteristics? मतलब we know that India has rich and ancient culture. बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुराने टाइम से चलने आ रहा हमारा कल्चर है. That is very much true. But what are its main characteristics? जो main characteristics क्या है? Its guiding principles. Guiding principles क्या है? How has it manifested itself in India's history? And how can it help us to deal with issues of our times? These are some of the questions that this theme is exploring, with the objective that every student should understand some of the cultural foundations of our civilization and learn to appreciate their value. Next we have theme D, that is your polity. ठीक है, governance and democracy. Citizens of any country should know how their political system functions. अगर आप एक for example आप इंडिया के एक सिटीजन हो, ठीक है, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, यू शुड नो दैट हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्मिंग, गवर्नमेंट बन कैसे रही है, हाउ दीज एमपीज और एमएलएज दे आर दे आर गेटिंग देयर पोजीशन, दे आर एक्वायरिंग देयर पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस कैसे मिलती है, प्रेसिडेंट की ऑफिस, गवर्नर की ऑफिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इलेक्शन क्या होता है, एंटी डिफेक्शन क्या होता है, करप्शन क्या चीज होती है, each and everything you should know, at least not in depth but at the surface level, कि ठीक है, if someone is talking as a citizen of India, you should know कि ठीक है मेरे देश में, मेरे country में ऐसे ऐसी चीजें होती हैं, right?
India, as the world's largest democracy, has an elaborate system working at different levels. What are its chief characteristics and components that we say? The state and the central level. Then we have separation of powers as well, so you should know all these things. How do the citizens participate in the overall governance? जो citizens होते हैं उनका क्या रोल होता है गवर्नमेंट में, वो लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, what are their rights and also their duties और धर्म. If you talk about fundamental rights जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती है, बट एट द सेम टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज वो हमसे एक्सपेक्ट करती है टू परफॉर्म, राइट. आर देयर डिफरेंट सिस्टम्स इन अदर कंट्रीज एंड इफ सो व्हाट टाइप? क्या जितनी भी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, डू ऑल दे डू ऑल दे फॉलो दिस डेमोक्रेसी? So the answer is no. So what all types of government do they have? Then how are different countries supposed to interact? और जो अलग अलग countries if you see like India, Russia, India, China, India, Pakistan, India, USA, इंडिया, ब्राज़ील, ये जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक जितनी भी कंट्रीज हैं, हाउ डू दे इंटरैक्ट विद ईच अदर? कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है और मे बी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन थ्रू विच दे interact with each other? तो ऐसी क्या चीज़ है that we'll study in this. By studying this theme, we can become more responsible citizens, understand how the organs of the government functions, and learn to have a say in the policies that affect us all, whether locally or nationally, right? Okay. Next, we have theme E, that is economy. This is your economy part. No family can be happy without the essentials of daily living, at least food, clothing, shelter, ghar, kapda, makan, that we say. Access to water in the first stage. In second, livelihood for adults and access to education for the younger ones. Similarly, यहाँ पे क्या कहते हैं कि बेसिक चीज़ें जो हमारे लिए होती हैं, that is house, एक घर होना चाहिए रहने के लिए. Then we should have clothes to wear, हमारे पास कपड़े होने चाहिए. Then फूड अगेन, खाने के लिए सामान होना चाहिए, खाने के लिए फूड होना चाहिए, ठीक है. देन फॉर अडल्ट, अडल्ट का लाइवलीहुड विच मीन्स कुछ काम होने चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, राइट. और यंगर वंस मतलब जो छोटे बच्चे हैं, द चिल्ड्रन, they should have right to education, access to education, proper education. Similarly, no country can develop harmoniously without a sound economy. But how does an economy work? Economy काम कैसे करती है, especially in a huge country like India? Economy चलती कैसी है इंडिया की? What is this GDP? And GDP तो बहुत ही common word है जो आप सबने at least सुना होगा. Maybe किसी teacher के मुंह से, किसी parents के मुंह से सुना होगा. Maybe news you might have heard this or in newspaper. तो GDP क्या होती है? तो बहुत ही basic चीज़ है that we study, ठीक है. Then what exactly is money? पैसा क्या होता है? पैसा आता कहाँ से? पैसे को हम बढ़ा कैसे, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? हाउ कैन इट बी इंक्रीज? तो पैसा बढ़ कैसे सकता है? व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन पीपल एंगेज देमसेल्फ इन? कितने तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं जिसमें जो लोग हैं अपने आप को दे कैन एंगेज इन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी सो दैट दे कैन अर्न मनी एंड स्टेटस एज वेल. हाउ आर natural and human resources best managed? This theme will lay down some of the important concepts and practices that will enable us to answer these questions. Okay. Now you will notice that there are many questions in the preceding paragraphs. Preceding मतलब जो पिछले हमने paragraphs पढ़े उसमें बहुत सारे हमने questions देखे, right? This is as it should be. Social science is all about the art of asking the right question. Only then we can start looking for the right answer. This also explains the presence of big questions at the start of each chapter in this book. You may also be intrigued to find a game of chess and some ancient Tamil poetry in chapters that apparently deal with geography, a discussion on the uses of sari in a chapter on cultural heritage, as the concept of seva, and a mention of festivals in chapters focusing on economics. This is deliberate. We believe in bringing elements from diverse fields together. This enriches our perspective. Indeed, life constantly mixes numerous elements together, so why should we not? By now, it should be clear that although social science makes constant use of the past, it seeks to make sense of the present so as to help us prepare a better future. It is an exploration and an adventure as well. ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़, यहाँ ये जो पैराग्राफ है, इट बेसिकली सेज जैसे कि हम कुछ तमिल पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे ऐसे चैप्टर में जहाँ पे बेसिकली वी आर डीलिंग विद ज्योग्राफी. कुछ ज्योग्राफी के चैप्टर्स में हम तमिल पोइट्री के बारे में पढ़ सकते हैं एज एन एग्जाम्पल, एज yes, as an example, or as something that is related to geography. Then हम साड़ी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं when we are talking about cultural heritage. Then we can study about the concepts like seva and festivals if you are studying economy. तो ये जानबूझ के किया है एनसीईआरटी ने. The reason being कि वो चाहते हैं कि in life
ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स आपके पास होते हैं, but they are all interrelated, intermixed with each other. So they say that in book also, in theory also, we should link the different aspects with each other so that it will give you a clear understanding, right? So this was it for today. This is all that we'll be doing today, because this is the introduction part. Now from the first chapter of geography, that will be starting tomorrow, ठीक है?